was his son. So this is a lecture all about the strategy for the phase 2 exam to be conducted on 2nd of September 2023. Now in this lecture I will be basically discussing the strategy that you can follow in the next 40-45 days that you have in hand. Now before explaining that, just information about the phase 1 exam. Obviously the result is yet to be declared, but what could be the tentative cutoff? Now given that the paper 1 was relatively easier this year, but since English was also added in phase 1, so that makes things difficult in the sense that what will be the overall cutoff. Now last year it was 41, but it was only for the economics. Now this year it is economics 100 marks and English 100 marks. Now given that the nature of the question was relatively easy, plus the format of the question was also different, in the sense 35 question was there for 2 marks and 30 question for 1 marks, but in that 2 marks the negative weightage was more, so the negative marking is higher. Now given that the negative marking is higher, I don't think the cutoff will be very high. So cutoff must be below 50 for sure, but it will be in the range of, I can say, 45 to 50 to be on safer side. It may go down also, but 45 to 50 that you can expect. So if you are scoring around that, if you are scoring, I think I can say that if you are scoring in excess of the 40, just prepare for phase 2. Now in that phase 2 you have limited time available. Now in that limited time of around 40 to 45 days, what you can do, obviously you must have done prior to that also, but what could be the best strategy for this? What could be the pattern of question? What could be the pattern of the question paper? Because now there are two descriptive paper, 100 marks for phase paper 1 and 100 marks for paper 2. Now but the timing is basically for the 2 hour. So how many questions you can expect in the micro, from which section, in macro how many question from which section? So I will be discussing all those about in next few minutes. Just go by the syllabus part first. So when we focus completely on phase 2, now this phase 2 will have two paper. Paper 1 again divided into two part. Phase 2 paper 1. Now paper 1 is further divided into two parts, that is a micro and macro module, and second paper again divided into two parts. One is your mathematical and second is Indian economy. So we can say there are four parts: micro module, macro module, mathematical module and the Indian economy section. Now
what could be the nature of question or pattern of question? Since the syllabus say that equal weightage will be given to the micro as well as the macro, you can go by the syllabus part. Phase 2 paper 1 include a micro module, and that micro module include consumer theory, production theory, market theory, pricing under different market structure, distribution theories Ricardo, Marx, Kaliski and Kaldor, welfare criteria about Pareto optimality, schools of welfare thought including Arrow, Coase and Sane. So in the micro section it states 5 different subpart, starting from the consumer theory, production theory, market, distribution and welfare. Now out of these different parts, I will say the most important one in the sense from which section you can get more than one question or 2 or 3 question. The most important part according to me will be the market structure part, pricing under different market structure. So the syllabus is pricing under different market structure. So you must be aware about the pricing practices adopted in the different market structure, starting from perfect competition, in monopoly, in monopolistic, in oligopoly. So like for example in monopoly the pricing practice could be price discrimination. So there could be question related to third degree price discrimination, second degree or first degree. It could be the concept of peak load pricing, intertemporal pricing. The question could be on the 2-part tariff also. Why monopolies do not have a supply curve also. It says pricing under different market structure. So you have to cover different market structure. The question from oligopoly could be from collusive oligopoly and the non-collusive oligopoly. In the collusive oligopoly, it could be related to price leadership model. Within price leadership model, it can be dominant from price leadership model, low cost from price leadership model and barometric from price leadership model. Like for reference, you can go to the question of the civil service economics optional as well as the Indian economic service. So you can have multiple questions that has been asked. Just for example, the question says that in the price leadership model, the dominant firm set the price and all fringe firm act accordingly. Comment. तो आपको अगर वो कमेंट करना है तो you have to explain that entire dominant from price leadership model. The question say that what type of conjectural variation has been involved in Paul-Swayze models. So what is the meaning of conjectural variation वो पता होना चाहिए. And what type of conjectural variation has been involved in the Paul-Swayze model. तो Paul-Swayze का जो किंग डिमांड का मॉडल है उसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए. How it explain price rigidity and not price determination, you have to explain that part. But remember now the question is descriptive in nature. So since it is descriptive in nature, then you have to elaborate it. It is not going to be mainly numerical now. It will be going to be mainly descriptive or analytical in perspective. So you must know how to elaborate, but elaboration should not be in your own words. Preferably you are basically writing from the core sources. If you write it from the core sources, then it will be better according to me. That means अगर हम बुक इस लैंग्वेज के फॉर्मेट में वहाँ लिखते हैं, then expect more marks, and that is happening in almost all competitive examination, whether it is for the economics optional or whether it in the economic service, similarly in the RBI. Exactness important है. तो exactness अगर important है, like question आपसे माइक्रो में कोई भी रेगुलर क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू हाउ और हाउ प्राइस इफेक्ट इज द सम टोटल ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, एक्सप्लेन इट. या ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर बट नॉट ऑल इन्फीरियर आर गिवन. दिस टाइप ऑफ रेगुलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द कंज्यूमर डिमांड थ्योरी. बट वहाँ पे प्राइस इफेक्ट एग्जैक्टली डिफाइंड डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एग्जैक्टली डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम इफेक्ट, how that is defined in the Stutsky approach, how that is defined in the Hexen approach. Because इस level पे अगर आप पेपर लिख रहे हैं then you can explain that part also, you can add that part also for value addition in your answer. So question will be from the consumer theory, indifference curve description mainly, but indifference curve description don't expect question in the form that explain consumer equilibrium by using budget line or indifference curve. The question, the nature of question could be
how we can derive the backward bending lever supply curve by using the indifference curve approach. Why lever supply curve is backward bending? Explain that. To explain that, we have to use the indifference curve description. Question in the production and production category, law of returns to scale, partial and the general equilibrium analysis. Now remember, in this partial and general equilibrium analysis, we are referring to the Marshallian and Walrasian approach. Within that approach, it could be whether it is stable equilibrium or unstable equilibrium. So what is the meaning of stable equilibrium? What is the meaning of unstable equilibrium? So what is a stable equilibrium? Unstable equilibrium, you must be explaining it exactly. Then in which condition there will be Marshallian stability? In which condition there will be Walrasian stability? All those things and related to that videos are already uploaded. So just go by that, but try to write answer. Make a habit of writing few answers every day. That will help you to learn the notes and try to reproduce it. उसे आपको बस reproduce कर देना है. तो the question could be like, is Walrasian stability necessarily guarantee the Walrasian stability or vice versa? तो अगर statement wise वहाँ question आ गया तो you have to are expected to explain the in totality. Now market structure के question है. Similarly distribution theory include Ricardo, Marx, Kalasky and Kaldor. Kaldor is the most important distribution theory. So in all likelihood there will be question from the Kaldor theory of distribution. Although something is not written like marginal productivity theory of distribution, rent or cost rent, but even those things has been explained in the distribution lecture. So just go by that lecture. बट आपको सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करना है. उस पॉइंट को मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ हमने वीडियो देखा, नोट्स पढ़ लिया, अंडरलाइन कर रखा. यू हैव टू राइट इट. अनलेस यू हैव नॉट रिटन इट 1 or 2 times प्रायर टू द फाइनल एग्जाम, you won't be able to write it exactly. Welfare criteria, the question will be from Pareto optimality, Arrow's impossibility theorem, Akesson welfare function. It could be also the Kaldor-Hicks compensation criteria. Like a question could be, what is the problem of the Pareto optimality condition? How Kaldor and Hicks overcome that limitation, and what is Setosky view in that regard? This question you can find regularly asked in this optional paper, also asked in the economic service. So you can expect this type of question to be asked in the RBI as well. तो वहाँ पे आपको Pareto optimality, Kaldor's compensation criteria, Setosky paradox, welfare function में Samuelson-Bergson welfare function, which include Ravindra welfare function, Benthamide welfare function, वो सारे ऐड करके, और Arrow's impossibility theorem and Akesson. So if you prepare these 4-5 out of that, you know that you are going to get one question. 5 points यहाँ लिखे हैं ना, तो necessarily there will be one question each from all topic. It will be there. और यहाँ limited number of question. It is not that they are asking very unusual question. There could be, but you can leave that question. You will have the option. It is not going to be all question will be compulsory in this section. You will be getting the choice. One probable possibility that what could be the nature of pattern or question paper. One option is that question pattern could be in both paper. I will say question is divided into 2 sections, section A and section B, and in both section 5 questions are there. That is one option, and you have to attempt any 5. You have to attempt basically any 5. बट अगर any 5 होगा लिख रहे हैं तो उसका मतलब हो गया कि हर क्वेश्चन पे 20 मार्क्स का होगा. ठीक है, अगर ग्रेटर वेटेज का क्वेश्चन बनता है तो ग्रेटर वेटेज का क्वेश्चन अगर बनाया जाए देन इट कैन बी आस्क्ड इन दैट वे, बिकॉज 5 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स अगर हम लिखते हैं, बट दैट मीन्स देयर क्वेश्चन कुड हैव सब पार्ट्स इन दैट कंडीशन. तो सब पार्ट्स अगर मैं हर क्वेश्चन के अंदर ऐड कर दूँ तो अब आउट ये 10 की जगह 20 क्वेश्चन हो गए. तो नाउ यू हैव अ ग्रेटर, दैट मीन्स ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 10 मार्क्स देन, मतलब पार्ट्स इंक्लूडेड है बट कॉम्बिनेशन विल बी देयर.
तो कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये पॉसिबल है कि स्टूडेंट सेलेक्टिव होंगे, तो अगर उन्होंने सेलेक्टिव हो गए तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेटर होता है कि आप अलग अलग क्वेश्चन को क्लब कर दो। तो माइक्रो का जो क्वेश्चन है, लाइक वेलफेयर किसी ने अगर छोड़ रखा है तो वेलफेयर को मार्केट के साथ क्लब कर दिया। दैट मीन्स यू आर चूजिंग द क्वेश्चन टू आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द मार्केट, you have to answer the welfare question also. So one chance is that there will be 5 questions in this way, and out of that they can say that question number 1 and question number 1 in both section is compulsory, मतलब एक एक क्वेश्चन कंपल्सरी भी कर दे, और कंपल्सरी करने के बाद अटेम्प्ट एनी 5 सेलेक्टिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। मतलब हमने फर्स्ट और ये 5th कर लिया, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अगर यहाँ से कर रखा है तो किसी एक क्वेश्चन को यहाँ से कर लेंगे। दैट इज़ वन वे, बिकॉज द सिलेबस एक्चुअली से दैट माइक्रो और मैक्रो इक्वल वेटेज विल बी गिवन। तो इक्वल वेटेज अगर गिवन है तो उसका मतलब है कि वन पैटर्न इज दैट द नेचर विल बी वन सेक्शन इज ऑल अबाउट माइक्रो, अदर इज ऑल अबाउट मैक्रो। एक पूरा का पूरा सेक्शन माइक्रो का है, एक पूरा का पूरा सेक्शन मैक्रो का है। अब अगर पूरा माइक्रो का और मैक्रो का है तो भी यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट हो रहा है कि दोनों से इक्वल परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन करने हैं मुझे, या फिर हम चूज़ कर सकते हैं किसी एक से ज़्यादा कर सकते हैं। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रक्शन। तो रीड दैट इंस्ट्रक्शन केयरफुली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। बट वन पॉसिबिलिटी दैट ऑब्वियसली सेक्शन वाइज क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन में एक एक क्वेश्चन कंपल्सरी होने के भी पूरे चांस है। तो गिवन दैट देयर विल बी सम कंपल्सरी क्वेश्चन, इट इज़ बेटर टू कवर द कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आई थिंक नहीं होने चाहिए एक सिंगल क्वेश्चन, बिकॉज दैट लिमिट द ऑप्शन फॉर द एग्जाम पेपर सेटर। डिस्क्रिप्टिव का वेटेज बढ़ा है तो ऑब्वियसली दे विल बी गोइंग टू आस्क मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो मोर देन 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन होगा, आई डोंट एक्सपेक्ट। सो अ क्वेश्चन कुड बी ऑफ 5 मार्क्स ऑल्सो। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी किया और इसके हमने 4 पार्ट्स बना दिए, तो 20 मार्क्स का बेसिकली ये पहला कंपल्सरी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वो 5 मार्क्स के बेसिकली हर सेक्शन से हमने एक एक टॉपिक के क्वेश्चन ले लिए। तो दीज कुड बी द वे ऑफ क्वेश्चन पैटर्न इन फेज 2। Now coming back to the content part, the second module in paper 1 is all about macro. In macroeconomics it says national income accounting. Remember we are syllabus 2023 onwards revised है, so 23, 24 ये सारे अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली होने। तो फर्स्ट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वेरियस मेथड्स फॉर द मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। बट बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज देर आर वेरियस मेनी थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन दिस कैटेगरी। थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, दिस इज द मेन पार्ट विच इज क्लासिकल, केनेशियन, ISLM, क्राउडिंग आउट, लिक्विडिटी ट्रैप, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। तो दिस इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल पार्ट। बिजनेस साइकिल, रीजन फॉर बिजनेस साइकिल, फूलिंग मॉडल, न्यू क्लासिकल कंसेप्ट। सो फ्रॉम दिस एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चन, allocate more time for this part and cover this as well. Inflation, types of inflation, Phillips curve, Okun's law, Taylor rule, locus critic. So from the Phillips curve and Okun's law and from inflation targeting and interest rate targeting expect a question. तो ये क्लब करके बेसिकली आप इसे मैक्रो वाले सेक्शन के अंदर ही रखते हो। Then money banking and financing related to quantity theory of money, neutrality, ISLM model, मनी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी। तो रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी बिकॉज RBI का पेपर है, सो वी कैन एक्सपेक्ट रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी मल्टीप्लायर दे विल बी क्वेश्चन। बट डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लायर could be one, application could be what is the impact on that money multiplier if there will be some behavioral changes like more and more use of the online banking, internet banking, then how it will affect the multiplier, how it will affect the money supply in the economy. These two is basically theories of economic growth. ये growth and development का section है। तो growth and development में in fact there are various models like starting from the Harrod model, Domer model,
बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ, देन रोमर मॉडल, एके मॉडल, इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल क्लब कर दिया, एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल क्लब कर दिया, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट वो ऑलरेडी पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए। तो अराउंड 10 to 12 मॉडल्स बेसिकली हैं। इफ यू प्रिपेयर ऑल यू विल बी गेटिंग मोर देन वन क्वेश्चन फ्रॉम दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वन, एंड द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। वन सेक्शन से थियरीज ऑफ ट्रेड। सो व्हेन यू एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ ट्रेड, understand new trade theories as well as the old trade theories. Within old theories, Ricardian, HO model, specific factor model, standard trade model, new trade theories on economies of scale, internal economies and external economies of scale, and also you can add the technological gap model. So out of those there will be one or two question part. Balance of payment and the impossibility trinity. It simply said determination of exchange rate. So exchange rate determination has two theories. One is the interest rate parity approach, other is the purchasing power parity approach. तो दोनों क्लियर होना चाहिए। और impossibility trinity can be asked in the form of direct question also और Mundell-Fink model के question. Although it is not written adjustment policies in the BOP. So adjustment policy like expenditure reducing policy, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, इलास्टिसिटी अप्रोच, एब्जॉर्प्शन अप्रोच। तो वैसे क्वेश्चन भी इफ़ यू हैव टाइम यू कैन प्रिपेयर दोज क्वेश्चन एज वेल। एंड द लास्ट वन इज द पब्लिक फाइनेंस, थियरीज ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। थियरीज ऑफ टैक्सेशन विल इंक्लूड concept like approaches to tax equity, ability to pay principal, benefit principal, ability to pay principal को further explain करना है, equal marginal sacrifice rule, equal proportional sacrifice rule, equal absolute sacrifice rule. थियरीज ऑफ पॉली एक्सपेंडिचर के अंदर कुछ प्रोमिनेंट थियरीज है लाइक वैगनस लॉ, वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस। तो वो सारे स्पेसिफिक आंसर आप रिक्वायर करते हैं कि आपके पास एक रिटन कंटेंट होना चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट। यू मस्ट हैव ऑन ऑल द टॉपिक यू मस्ट हैव द रिटन कंटेंट रिटन फ्रॉम द बुक, and then from that written book you are writing answer, preparing or practicing it, and then you are writing in the final examination. That means the exactness. RBI के पेपर थोड़े स्कोरिंग हो गए, फेज 2 में they will be giving you more score, unlike economic service और ऑप्शनल जहाँ पे 50% से कम देने की टेंडेंसी रहती है, यहाँ पे 60% और 70% के बीच मार्क्स देने की टेंडेंसी है, provided you are writing it exact, because cut off indicate करता है the cut off for phase 2 is going to be the higher. So in phase 2 again you have to maximize whatever you have done in phase 1. Remember cut off से ऊपर हो but आपको exactly number नहीं पता है कि where you are exactly, so you have to maximize your score in phase 2, because इंटरव्यू फिर लास्ट में सिर्फ 75 मार्क्स का होगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इम्प्रूव करने का, बिकॉज 400 मार्क्स ऑलरेडी हो गया अब आपका फेज 2 को अगर इंक्लूड करने दो, तो वेटेज फिर इंटरव्यू का 75 आउट ऑफ दैट 475 विल बिकम वेरी लेस। सो ट्राई टू मैक्सिमाइज इन फेज 2। पेपर 1 and 2 प्रेडिक्टेबल होंगे, मतलब यहाँ पे ऐसे होंगे कि यू नो द आंसर, यू हैव टू बेसिकली चूज फ्रॉम वेरियस कॉम्बिनेशन, आपको चूज करना, बट योर स्कोर विल डिपेंड अपॉन हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नेक्स्ट 40-45 डेज, ठीक है, जो टाइम अवेलेबल है। देन द फेज पेपर 2 इंक्लूड द मॉड्यूल ऑन द क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड इकोनॉमेटिक्स मॉडल, and it also include the Indian economy section. Within Indian economy section again there are 5-6 parts which is written is fiscal policy in India, evolution, scope and limitation, monetary policy in India, evolution, function and our Reserve Bank of India, monetary policy coordination, inflation targeting. तो इफ़ यू फाइंड दिस मॉनेटरी एंड बैंकिंग, इसको क्लब करके पढ़ो, एंड इन्फ्लेशन कैन बी कंसिडर्ड एज सेपरेट, एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, एक्सटर्नल रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट ट्रेंड्स, और ये सेक्टोरल एंड अदर डेवलपमेंट लाइक एग्री, इंडस्ट्री, सर्विसेज। बट इंडस्ट्री का मतलब है अलग अलग पार्ट्स हैं यहाँ पे,
The question could be on public sector, the question could be on MSME, it could be on the industrial policy, it could be on the industrial performance, industrial slowdown. Similarly, question in the agriculture sector. यहाँ पे भी आपको बेसिकली क्या करना है, although it will be done in the lecture also related to the Indian economy part, but you have to prepare a write-up, preferably from the book. For Indian economy, static book में you can refer Mishanpuri, you can refer Tuma Kapila also, but try to supplement it from the economic survey. तो इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर का अभी तक अवेलेबल होगा, उस इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप रीड करते, बट यू कैन से सर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का भी उतना डिटेल या उतना टाइम नहीं होगा. इट इज़ नॉट नीड टू कवर इट कंप्लीट सर्वे बिकॉज इट इज़ ओनली वेरी वॉल्यूमिनस. हमें करना क्या है, उस जितने भी चैप्टर है फ्रॉम दोज चैप्टर वी हैव टू एक्सट्रैक्ट सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंस एंड पैराग्राफ. इट हैज़ ऑलरेडी बीन डन. वी विल बी शेयरिंग विथ यू in this paper Indian economy lecture. Like for example in the agriculture, read the first paragraph written below agriculture price policy. Around 25-30 words का वो पहला जो sentence होगा, well crafted words होते हैं. If any student will be using that sentence in the answer, it will be going to fetch more marks. Provided वो आप लिख भी सकते हो जब आप उसको याद होगा. याद रखने के लिए पहला काम है मुझे उस सेंटेंस को अपने नोटबुक में करना है. इन नोटबुक आई विल रीड इट एंड राइट इट अगेन एंड अगेन सो दैट आई विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट इट इन माय आंसर. तो अराउंड लेटर से 35-40 शॉर्ट पैराग्राफ निकल गया इकोनॉमिक सर्वे से. वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. 35-40 शॉर्ट पैराग्राफ अराउंड 20-25 वर्ड्स का, उसको आप रिपीटेडली पढ़ो. इन दोज मेनी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू यूज़ इट in I think most of the question. बट जहाँ भी कोई वो एज अ इंट्रोडक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ कंक्लूजन हम इसको यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज द नेचर ऑफ क्वेश्चन इज डिस्क्रिप्टिव. सो योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट डेटा. रिमेंबर कि कंप्लीट डेटा याद है. वी हैव टू एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड इट. इन सम क्वेश्चन डेटा विल बी इंपॉर्टेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर एक्सप्लेनिंग द composition and direction of trade. So composition and direction of trade require data. If we are studying the growth story of Indian economy, then also it requires the data. So for the Indian economy part section, apart from that Mishapuri or Uma Kapila refer that economic survey part. बजट के डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होंगे, बट इकोनॉमिक सर्वे को आपको इंटेलिजेंटली इंकॉर्पोरेट करना है. एंड दिस इंडियन इकोनॉमी सेक्शन इज इंक्लूडेड इन पेपर 2 अलॉन्ग विथ मैथमेटिकल. तो अगेन यहाँ पे इक्वल वेटेज आई थिंक रिटन है. इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू क्वांटिटेटिव एंड इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड मॉड्यूल. सो अगेन द नेचर ऑफ क्वेश्चन इन दैट विल बी अगेन सेक्शनल. देयर विल बी 2 सेक्शन. सेक्शन ए विल बी ऑल अबाउट मैथमेटिकल एंड सेक्शन बी विल बी ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमी. तो जो प्रोबेबल सेट मैंने यहाँ बना रखा है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द वे इन विच क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. ऑल्दो पैटर्न में डिफर, बट इसके चांसेस ज़्यादा है कि आपको 10 क्वेश्चन बेसिकली दिए जा रहे हैं. अब वो 10 इंडिपेंडेंटली भी हो सकते हैं. उनमें से 5 किया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर वो ए और बी के पार्ट में भी हो सकते हैं. एंड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी ऑल्सो. दैट मेक सेंस. तो कंपल्सरी क्वेश्चन का पार्ट भी वहाँ पे इंक्लूडेड हो सकता है. क्लियर? सो बट हियर 3 पार्ट्स, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड इकोनॉमेट्रिक्स. 3 पार्ट है. तो प्रोपोर्शन भी उसी ऑर्डर में होगा. अगर इफ दे आर क्रिएटिंग 10 क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमेट्रिक्स, सो एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन फ्रॉम देयर, 2-3 क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, 2-3 क्वेश्चन फ्रॉम हेयर. क्वेश्चन ऑन द इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज. अब टाइम सीरीज का जैसे क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्विस का भी पेपर में आ रखा है, फिशर इंडेक्स. तो इंडेक्स नंबर के अंदर बेसिकली क्वेश्चन, तो आपको वो पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट इट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट. बिकॉज द क्वेश्चन कुड बी हियर नॉट ओनली न्यूमेरिकल, बिकॉज रिमेंबर द नेचर इज रिटन एट डिस्क्रिप्टिव टाइप. सो देयर विल बी सम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑल्सो. सो बी रेडी फॉर दैट थ्योरेटिकल क्वेश्चन. And including this type of new topic like artificial intelligence or machine learning. So everything will be has been provided in terms of the lecture. Just go through those lecture. जो next
40-45 डेज अगर आप कंबाइन करके प्रिपेयर करते हैं, दैट नेक्स्ट 40 डेज, बिकॉज रिजल्ट यूजुअली थोड़ा पहले आ जाएगा, फेज 1 का रिजल्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट सिंस इंग्लिश का पेपर एडेड है, पहले तो ऑब्जेक्टिव होते थे तो विद इन अ वीक वो रिजल्ट आ जाता था। इंग्लिश का पेपर एडेड है तो दैट विल टेक सम टाइम फॉर इवेल्युएशन, but just you have right now you can say 40 days, but I think it is good enough time for preparing this type of examination. That means if you can allocate 4 different section, if you can allocate 10 days each for micro, for macro, for Indian economy as well as for the mathematical side, या फिर अपने एडवांटेज के अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ करो कि जो आपका एडवांटेज है उसी पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना है। Don't try to convert your weakness into advantage in the next 40 days. It is not going to happen. कि आपका जो weakness है वो advantage में convert हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। So आपको smartly use करना है आप available time को। जो available time है उसमें जो written content available है, suppose you have not prepared one particular unit well, it is not going to create much problem because of the format of the question. You will have the option, remember. तो option होंगे वहाँ पे आप उसको छोड़ सकते हो। So use it intelligently, plus write all the test. Clear? Write all the test. I will try to frame the test in this manner. That means I will try to incorporate more and more question in the test, so that even if you are preparing only through that test, then also it will be enough. That means it will be covering all the topics, what type of question can be created. So for phase 2 there will be paper 1 and paper 2, and including both there will be multiple tests as well. Clear? So content wise I think most of the lecture already uploaded there. A few remains to be done. It will be uploaded in next because you have time of 40 days. So we'll try to upload maximum by, try to complete by let us say 15th of August कि वो complete हो जाए, so that you have enough time after that also to revise that content which will be uploaded after this orientation lecture. Already जो कर रखे हैं उसके पास वो आपके पास available है, just practice it. But the written part is key, remember. How much you write, that will determine your score. How much you are reading, that will not matter. आप सिर्फ कितना पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा. How much you are able to write it, that will matter, because ultimately you have to write it, and it is a descriptive examination, so writing will matter. Clear? So I think I have explained all related to this orientation about the phase 2. ठीक है? Thank you.